फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। इंडियन प्रीमियर लीग इज फाइनली हियर। एक मैच हो चुका है, कल खेला गया था आरसीबी और सीएसके के बीच, जो सीएसके जीत चुकी है। आज है डबल हेडर, दोपहर को पहला मैच है पंजाब और दिल्ली के बीच, और उसी का प्री मैच डिस्कशन के लिए आज हम जुड़े हैं। एंड द मेन हाईलाइट ऑफ द मैच, एज यू ऑल I know, I'm pretty sure you guys all know, is Rishabh Pant. Rishabh Pant is making a comeback to cricket after 15 months after that horrific car accident and the major recovery that he did in the last 15 months. It took a lot out of him, but he is finally here on the field. He is here at the toss. And talking about the toss, I'll give you the basic update. Punjab Kings has won the toss. Shikhar, the captain of Punjab Kings, he has won the toss and they have decided to field first. So Delhi Capitals will be batting first. Rishabh Pant will be coming out with the bat first, and then hopefully with the keeping gloves. Well, to talk more about it, I have with me Animesh Nath and Dharmendra Singh, and we'll discuss क्या क्या होगा आज के मैच में और ऋषभ पंत को लेकर। धर्मेंद्र, हाईलाइट ऑफ द मैच, ऋषभ पंत, ही इज मेकिंग अ कमबैक। दोपहर का मैच है, गर्मी काफी है मोहाली में, अब नया स्टेडियम है मुल्लापुर स्टेडियम, वो भी पहली बार फैंस को देखने को मिल रहा है। तो इस मैचअप को आप कैसे देखते हैं बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स? एक्चुअली मैच तो वैसे तो नॉर्मल वैसे सारे मैच होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली स्पेशल मैच है। एक तरह से ये हम कहें कि ये जो वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप के लिए जो विकेट कीपर का जो सिलेक्शन होना है, एक तरफ जितेश शर्मा और एक तरफ ऋषभ पंत है। ऑब्वियसली ऋषभ पंत हमेशा फर्स्ट चॉइस हुआ करते थे, लेकिन अभी इंजरी के बाद आ रहे हैं। ये देखना होगा कि इंजरी के बाद वो कैसे खेलते हैं, उनकी फिटनेस कैसी होती है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। अगर कहीं भी अगर स्ट्रगल करते नजर आएंगे तो ऑब्वियसली उनके जो चांसेस हैं वर्ल्ड कप में खेलने के कम होते जाएंगे। फिर जितेश शर्मा के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी जितने भी हाल फिलहाल में मैचेस हुए हैं और जो T20 के फॉर्मेट में जिस तरह का हुआ, मुझे लगता है कि जितेश शर्मा पे टीम मैनेजमेंट की नज़र है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब तो ध्रुव जुरेल भी आ गए हैं, उन पे भी काफ़ी वो नज़र रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिसको पहले से आप ट्राई कर रहे हो, आप जितेश को पहले से ट्राई कर रहे हो, वो ऑलरेडी खेल रहे हैं और अच्छा भी खेल रहे हैं वो, और जिस तरह से मिडिल में आपकी ज़रूरत है। लेकिन ऋषभ पंत को देखिए, पहले तो ये लग रहा था कि पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अब खेल भी रहे हैं, कैप्टनसी भी कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे लगता है उनकी कैप्टनसी से ज़्यादा उनकी अपनी फिटनेस पर, अपने गेम पे उनका ज़्यादा फोकस भी होगा। सो ये मैच कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं सारे मैचेस को, जैसे कल ही बात हो रही थी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, अभी हमें इनकी बात नहीं करनी चाहिए। इनके प्लेसेस जो है ना, वो जो भी डिसाइड किया होगा टीम मैनेजमेंट ने, अगर रोहित शर्मा कैप्टन है तो विराट जाएंगे। लेकिन ऋषभ पंत और बाकी जो प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स को लेकर, स्पॉट के लेकर जो जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं और बाकी जो चीज़ें उस पर देखी जाएंगी। तो आज का मैच ऋषभ पंत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा आज कि वो उनकी फिटनेस किस लेवल की है। वो लगातार वो बैटिंग कर रहे हैं, नेट्स में सब कुछ वो आ रहे हैं, लेकिन मैच फिट कितने हैं आज, कहीं ना कहीं हमें एक झलक मिलेगी उनको देखने की। बिल्कुल, एंड ऋषभ पंत इज लुकिंग एक्सट्रीमली फिट। उनका जो पहले के आप इमेजेस देखे 2018-19 बिफोर ही वेंट इनटू दैट ऑब्वियसली हॉरिफिक एक्सीडेंट, थोड़े हेल्दी साइड थे, इस बार काफी फिट लग रहे हैं। बट अनिमेश, जैसे मैंने कहा, मैचअप बिटवीन दिल्ली एंड पंजाब, ये एक मिनी राइवलरी चलती है दोनों में। दोनों टीम्स में एक चीज कॉमन है, दोनों ने कभी ट्रॉफी नहीं जीती। पंजाब के लिए नई जर्सी है, नया स्टेडियम है। डू यू थिंक द न्यू स्टेडियम एंड द न्यू जर्सी विल ब्रिंग सम लक फॉर द होम टीम? देखिए, लक पे मैं ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। आपकी गेम ही आपको आगे लेकर जाती है, और पंजाब किंग्स ये बहुत कुछ कर चुके हैं कि अपनी टीम का नाम बदलना, जर्सी बदलना, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस ढूंढने में नाकाम रही है टीम। और जो चीज़ें कहीं ना कहीं आरसीबी के साथ रही हैं, वही चीज़ें कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के साथ भी रही हैं, कि एक जो प्रॉपर बैलेंस है वो टीम में कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाता है। और बार बार वो कोशिश करते हैं कुछ अच्छे प्लेयर्स लाने की, लेकिन पंजाब किंग्स की किस्मत इस मामले में मैं खराब मानता हूं कि जब प्लेयर्स उनकी टीम में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। चाहे वो जॉनी बेस्ट्रो रहे हों, चाहे हैरी ब्रुक रहे हों, जब उनके पास इनके साथ हैदराबाद में थे, उसके पहले यहाँ भी थे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं खराब जाती हैं पंजाब किंग्स के लिए। या पंजाब में थोड़ा फॉर्म को लेकर भी और ऑफ द फील्ड भी काफी मैनेजमेंट खराब रहती है। बट सुरम्या हैज जॉइंड अस फॉर दिस प्री मैच लाइव। सुरम्या, कल का मैच
a perfect start to IPL, Dhoni versus Kohli, but now all the focus shifts to Rishabh Pant. Big news, big player, big man, जो काफी टाइम से न्यूज में है कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हिज कमबैक. काफी टाइम कोई कह रहा था इस इंडिया सीरीज में शायद खेल ले, अब खेल ले, इंडिया इंग्लैंड में शायद आज, बट बीसीसीआई प्लेड अ वेटिंग गेम विद ऋषभ पंत. दे गेव हिम सम टाइम कि आप अपना टाइम लीजिए, एक ही बारी वापस आइएगा पूरे फिट होकर. और ऋषभ पंत जैसे कि मैंने कहा काफी काफी फिट लग रहे हैं. हाउ डू यू सी ऋषभ पंत मैच से पहले जो हाइप बन रही है, एंड डू यू थिंक दिस इज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू कम बैक एंड लीड द टीम, or should they have given captaincy to someone else? Well, these conversations will go on and on. You know, Yeah. people will come up with their own perceptions, their own opinions about Rishabh Pant as a captain, or there could have been someone else. Obviously, they have someone like David Warner, so people could have said that it would have been nice for DC to continue with Warner, but I think. Rishabh Pant is a name for DC. You know, it's synonymous to Delhi Capitals. You know, I don't think so that it'll be, a hype, or I don't think so. It'll be too much for me to say that as people associate CSK with Dhoni, Yeah. Kohli with RCB. I think people do associate Rishabh Pant with DC as well, you know, and DC has given Pant that platform. They've backed him a lot. Yeah. And firstly, obviously, a lot of credit goes to BCCI, the way they worked on Rishabh Pant, the way they made him fit for this season, because they announced him fit as a wicketkeeper batter. That's a very, very big thing. And we all know, I think it's up on public platforms that BCCI was the one who took really good care of Pant, and that's why he is here on this platform now. Before the match, when Pant was asked, about his feelings right now, he said that I'm pretty emotional, and he should be. I think anybody will be emotional after such a horrific accident, when you make a comeback and you see so many people flooding into the stadium just to see you, rooting for you. The whole nation is really very excited to see you. It's an emotional moment. So I think Yeah. whatever DC has decided, I really wish that it comes really, really fruitful for DC. Last year, they ended up on the second last position, but with Pant coming in, I just hope that they kickstart this tournament with a win. And if they win this match, I think it'll be the perfect gift for Rishabh Pant's comeback. Absolutely, he would want to start his comeback tournament with a win in Punjab against with the team of Delhi Capitals. But we'll talk about the playing 11 now. Punjab की playing 11 पे सबसे पहले बात करेंगे. धर्मेंद्र, शिखर धवन कैप्टन, जॉनी बेयरस्टो, सैम करन, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा, चाहर, अर्शदीप सिंह एंड शशांक सिंह. हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग 11? इनके चार जो ओवरसीज हैं, दे आर प्रिटी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर. जॉनी बेयरस्टो, वी ऑल नो on his day he can really turn the match around. Sam Curran, the perfect all-rounder they can ask for when he gets going. Obviously runs भी बहुत खाते हैं वो जब वो ऑफ फॉर्म होते हैं. लिविंगस्टोन बिग हिटर, लंबे लंबे छक्के हम सबको याद है. कगिसो रबाडा I believe is their spearhead after along with Arshdeep Singh. Kagito Rabada will lead their bowling attack. How do you see this lineup, and do you think this is a good enough lineup to do well in this season? या डेफिनेटली. अब अगर दोनों टीम का कंपैरिजन अगर करोगे तो टीम अब जैसे अभी अनिमेश भी बता रहे थे कि पंजाब हमेशा, वो सही बात है कि इनका एक हर आईपीएल में ऐसा होता है कि एक बैलेंस टीम, या मुझे लगता है एक फैक्टर मिसिंग है इस टीम में. अगर अदरवाइज इंडिविजुअल प्लेयर की बात करो, जॉनी बेयरस्टो जिस टीम में हो, सैम करन हो, रबाडा हो, इस तरह के प्लेयर आपके पास हैं. अर्शदीप हैं जो कि मतलब अगर T20 फॉर्मेट में अगर टीम इंडिया के एक फास्ट बॉलिंग कंटेंडर है, अगर बुमराह के साथ अगर हम देख रहे हैं उनके साथ खेलेंगे तो टीम में कोई बुराई नहीं, टीम बहुत अच्छी है. लेकिन समहाउ फिर वही लगता है ना कि एक फैक्टर जो मिसिंग हर बार होता है. हर आईपीएल में आप देखेंगे कि पंजाब की टीम मतलब लगता है कि टीम बड़ी अच्छी है, कुछ अच्छा करेगी, इस बार अच्छा करेगी, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं वो चीज मिल नहीं पाता, एक्स फैक्टर इनका आ नहीं पा रहा. लेकिन अगर मैं अगर अभी ऑनेस्टली अगर अभी दोनों टीम को कंपैरिजन करेंगे, अगर दिल्ली और पंजाब को, तो मुझे लगता है कि पंजाब की टीम अभी ज्यादा बैलेंस्ड है. अगर अब ये है कि शिखर धवन कैसी कप्तानी करते हैं, देखिए शिखर धवन का भी जो करियर है वो आखिरी उसमें आ गया. अब उनको भी पता है कि शायद अब टीम इंडिया में तुमको जगह मिलेगी नहीं, तो जो
जो बेस्ट अपना क्रिकेट खेल सकते हैं वो आईपीएल में खेलकर वो चाहेंगे कि थोड़ा और मेरा उनका जो करियर वो लंबा चले। तो अब सब कुछ डिपेंड करता है कि शिखर धवन कैसे इस टीम किससे परफॉर्मेंस कराते हैं, क्योंकि कैप्टन का एंड ऑफ द डे कैप्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो टीम जिस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या बैलेंस बना रहे हैं। तो काफी साल से ड्यू है वैसे कि पंजाब की टीम मतलब अभी आईपीएल में वो कर नहीं पा रही है जिनको करना चाहिए। टीम अच्छी होती है मगर हो नहीं पाता है। टीम अभी भी मेरा मानना है कि जो टीम आप अभी लाइनअप जो दिखा रहे हैं आप, जिस तरह के प्लेयर हैं, अगर ये अपने परफॉर्मेंस के साथ अगर अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के कंपैरिजन करके देखता हूँ तो पंजाब का मुझे भारी दिख रहा है प्लेयर्स के जिस तरह के प्लेयर्स इनके पास। Bilkul. And Animesh, do you think Punjab has everything covered in terms of their batting and their bowling and also the all-rounders and the wicket-keeping department? आपको कोई loophole या कोई weakness इस अगर 11 में लगती है? क्योंकि हम इस 11 की बात करेंगे, obviously throughout the tournament 11 change होती रहेंगी, but पहले मैच की 11 somehow gives you a picture of what the team is thinking in this season. तो आपको इस 11 को देख के आपको क्या लगता है कि यार ये एरिया है जो मुझे लगता है पंजाब को प्रॉब्लम दे सकता है? मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो बैटिंग लाइनअप है यहाँ पे मिस फायर हुआ है और जॉनी बेस्ट्रो लगातार आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं। सैम करन के बल्ले से भी वो रन नहीं निकले हैं जितनी एक्सपेक्टेशन पंजाब किंग्स उनसे रख रहा है। हालांकि फॉर्मेट चेंज होगा तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस भी चेंज हो। जॉनी बेस्ट्रो के बल्ले से वो फॉर्मेट अलग था, यहाँ पे फॉर्मेट अलग है, तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस आए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा तो निराश उन्होंने किया है। लेकिन ये टीम पूरी ऑलराउंडर से भरी हुई है एक तरीके से। देखिए आप देखिए सैम करन है, लिंगस्टन है, उसके बाद बरार है, हर्षल पटेल है और अर्शदीप सिंह भी बल्ले से कमाल करने से चूकते नहीं है। तो ऑलराउंडर्स की काफी भरमार है। उसके अलावा अगर सब्स्टिट्यूट्स पर जगह देखा जाए तो रिली रोसो, प्रभसिमरन सिंह, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑलराउंडर्स को कहीं ना कहीं वो मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से टीम बहुत अच्छी है, बस यही है कि वो एक बैलेंस के साथ क्लिक कर जाए तो ये पंजाब किंग्स को फायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर जरा भी मिसमैनेजमेंट हुआ तो फिर वो बैकफायर भी कर सकता है। और आज शशांक सिंह अपना डेब्यू कर रहे हैं, तो ये किस नंबर पर खेलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी तो मुझे लग रहा है बेस्ट्रो और धवन की होगी। उसके बाद वहां पे शशांक सिंह किस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं ये भी देखना होगा। बिल्कुल। और एक नाम अगर इस प्लेइंग 11 में है जिसपे सारी नजरें, जो आई थिंक धर्मेंद्र ने स्टार्ट किया था विकेट कीपिंग का, सुरम्या, जितेश शर्मा, अब प्रोबेबल फॉर द वर्ल्ड कप अलॉन्ग विद ऋषभ पंत, अलॉन्ग विद ध्रुव जुरेल, अगर वो राजस्थान के लिए कुछ कर पड़ते हैं तो आपको क्या लगता है हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस सीजन फॉर जितेश शर्मा एंड डू यू सी हिम गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप ऑन द बेसिस ऑफ दिस आईपीएल परफॉर्मेंस? See, Kanav, IPL is a very, very important tournament. You know, people can say whatever they want to, but the reality is that IPL is one of the platforms where cricketers are picked for major tournaments. And why not? You know, you'll be playing cricket for around 2 months. Your performances, your consistency matters a lot in this tournament. And if you can take the load, I would say that playing for 2 months is not an easy job. You know, that too, going to different cities, playing with different teams, facing different international players, it's not an easy job. So if you are able to take that pressure and then perform well, then it matters a lot. And especially when it comes to wicket keeper batters, I think Jitesh Sharma is leading the race over there, because he has done that over tournaments, not only in IPL, but whenever he has got the opportunity with Team India, he has given his best. Now, talking about Dhruv Jurel, again, you know, I think the other day I was talking to Sahil and he was saying that, you know, the biggest question is, will Sanju Samson give wicket keeping gloves to Dhruv Jurel? That's a big question with RR, you know, who knows? And nobody even knows till now that whether Dhruv Jurel will be batting in the middle order or where he will be batting and what will be his role in the team. So that matters a lot. Now, here in Punjab Kings, Jitesh Sharma's role is fixed. He has to play as a wicket-keeper batter. So I think he should focus on both the sides. He should keep the wickets well that he's been doing, and obviously then bat well. You know, if Jitesh Sharma goes for, some great shots and, banks a lot of runs in this season, for sure he will be in that T20 World Cup squad. But kind of talking about the whole squad, I know that the pitch won't offer much turn in the new stadium in Mohali. What I'm very surprised with Punjab Kings is their selection. They haven't opted someone like Sikandar Raza. If we look at Sikandar Raza's past performances in the leagues that he has played, he was the highest run scorer in IL T20, which happened last month. He was also, the T20
captain of the T20 team, ICC T20 team last year. So, and he was also the highest run scorer last year in the T20 format. So, if you're not opting for someone like Sikandar Raza and not solidifying your middle order, I think that can backfire somewhere or the other Punjab Kings in this tournament. I know that they have a problem of plenty, but I'm really very unsure what will, say Harshal Patel, Kagiso Rabad, or Rahul Chahar will give in that lower order in terms of batting if it goes But to that level. who will sit out if Sikandar Raza comes in? That's the question. Yeah, that's what I'm saying. They have the problem of plenty because they have to manage Yeah. their 11 that way. But what I'm saying is, that I feel that they should think of Sikandar Raza. He's got that experience and should have tried him. Also, Yeah. as you said, Johnny Bairstow, you could have kept him out of the 11 given his performance. But as I think one of our panelists mentioned, new format, um, new league. So who knows how Johnny Bairstow will perform? And if Bairstow performs, I think that'll be a treat to watch because we don't get to see that often. No, absolutely. I mean, players like Bairstow, I understand that they're out of form, but they're also tempted to play him because you never know the day he fires. You don't need the rest of the batters to fire because he can single-handedly take things away from you. But yeah, fair point. Sikandar Raza, amazing talent, but you'll have to eventually swap an overseas player. ओवरसीड स्पॉट इतने Overseas player. स्पेस नहीं, वो ही ओवर problem है. स्पॉट है नहीं, फिर अगर उस पे कम है नहीं. रखते हैं कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट में भी लेके आएंगे तो सिकंदर के लिए जगह नहीं बनेगी। और And जो जगह पिच नहीं Animesh, का बनेगी. I बात You'll है have कि वो फिर पिच पे भी हाँ, वो टर्न है नहीं, ब्लैक सॉइल है, तो right. उतना टर्न मिलेगा नहीं, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो उतना रिस्क लेना Yeah. नहीं चाहेंगे। और सिकंदर अगर काम नहीं करते हैं तो बहुत महंगे साबित होते हैं, तो अभी But पंजाब I किंग्स think पहले मैच Animesh, में इतना रिस्क नहीं लेना चाहेगा। that problem lies with the team management, isn't it? You have gotten, or you have bought so many international players that now you are fighting or you are struggling to give them a yeah. spot in the 11. Also, in this year's auction, Punjab Kings went after the domestic players a lot. They bought a lot of domestic players at their base price. So that will be something very interesting to see how Punjab Kings use them, because right now they have a problem over there. They have plenty of international Yeah. players, and even if two of them don't work out on any given day, I think Punjab Kings will again face the same thing that they have been facing from so many years. Yeah, and problem of plenty with overseas. I think SRH is leading that chart with too many gun overseas player, and you only have 4 spots. So even their match will be really, really interesting to see. But talking about the Delhi Capitals team now, Dharmendra, the Delhi playing 11. If we can have it on our screen, a big miss here is Prithvi Shaw. There is no Prithvi Shaw in the 11. There is no Prithvi Shaw in the substitute list. Has Delhi moved on from Prithvi Shaw for now, for the start of the season? के यार let's focus on other batters. अगर जरूरत पड़ी, we'll go back to Prithvi Shaw. How do you see this miss from Delhi Capitals that there will be no Prithvi Shaw in the opening department? I think is nothing going in favor of Prithvi Shaw for last so many now so many years now. तो जिस तरह से उनका वो चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब क्या कई बार ना होता है कि हमें पता नहीं होता है, लेकिन अगर आज पृथ्वी शॉ जिस जगह पे खड़े हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार खुद ही हैं। उनकी लाइफस्टाइल क्या रही, किस तरह से उन्होंने किए हैं, वो जिस तरह से इतने अच्छे टैलेंट थे, उनको एक बहुत आगे की तरफ देखा जा रहा था, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। अब इसके बारे में कितनी बातें की जाए, हमने बहुत इनके बारे में बात कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है ना कनब की जो इम्पैक्ट होता है ना आपकी बाकी चीजों में अगर वो आती है तो उसका हर जगह हर टीम में फर्क पड़ता है कि एक आपका इमेज ऐसा बनता है, या आई डोंट नो कि उनका बिहेवियर, उसके बारे में मैं नहीं कमेंट करना चाहूंगा मैं कि उनका बिहेवियर कैसा रहता होगा, वो प्रैक्टिस में कैसे, टीम के साथ कैसे वो करते होंगे, वो सारी चीजें। लेकिन कहीं ना अगर वो नहीं है, अगर इस टीम से अगर बाहर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी। अदरवाइज देखिए कोई भी कप्तान होता है वो चाहता है, ऋषभ पंत भी अगर आए हैं तो चाहेंगे कि उनके लिए आईपीएल टूर्नामेंट अच्छा हो, तो किसी ऐसे खिलाड़ी को मिस नहीं करना चाहेंगे जिससे उनकी टीम को फायदा हो। अदरवाइज उनकी बैटिंग लाइनअप आप देखें तो मतलब जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है, मतलब फायर, मतलब डेविड वॉर्न और मिचेल मार्श अगर आपके वहां पर ओपनिंग कर रहे हैं, अगर वो सारी चीजें, खुद ऋषभ पंत, अब ऋषभ पंत की जो अब तक शाही होप है, तो बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है, मतलब बैटिंग में और बॉलिंग में भी कुलदीप यादव, इनफॉर्म कुलदीप यादव आपके पास है। देखिए हमेशा से आईपीएल के फॉर्मेट में स्पिनर अगर आपके पास अच्छा, आपके फेवर में अगर है, आपके साथ अच्छा है, अगर आपकी टीम अगर अच्छा स्पिनर है तो एक एडवांटेज तो हमेशा आपके लिए होता है।
तो कहीं ना मतलब देखिए मुझे थोड़ी सी इनकी फास्ट बॉलिंग को लेकर थोड़ा सा वो है कि मतलब वो धार नहीं दिख रही है जो नॉर्मली वो इस टीम में, अदरवाइज अक्षर पटेल भी इनकी टीम में है। ईशांत शर्मा देखिए बहुत बहुत मतलब काफी दिन हो गए मतलब ईशांत शर्मा के मतलब उससे परफॉर्मेंस देखे हुए कि ईशांत शर्मा, लेकिन अब उनको वो किया गया, पहले मैच में खिलाया जा रहा है। हो सकता है कि सेशन जो 100 टेस्ट खेल चुके हैं ईशांत शर्मा, मतलब वो तो देखने में भी वो लगते हैं कि अगर उनको देखो तो लगता है कि वो यंगस्टर हैं, लेकिन वो 100 टेस्ट खेल चुके हैं ऑलरेडी। तो वो टीम ओवरऑल इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे फिर भी अभी मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करूंगा कि मुझे बैलेंस जो टीम में दिख रही है पंजाब की टीम में ज्यादा बैलेंस है, उनके पास ऑलराउंडर ज्यादा है। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि शिखर धवन अपने प्लेयर से कैसे परफॉर्मेंस लेते हैं, वो डिपेंड करता है। अदरवाइज समहाउ मुझे इस मैच में अभी जो प्लेइंग 11 जो मैंने देखा, जो टीम देखी है, वो ऑलराउंडर देखिए क्या होता है कि वैसे भी T20 में ऑलराउंडर, अगर आपके पास बेहतर ऑलराउंडर है तो उसका फायदा आपको मिलता है। उनके पास बेहतर ऑलराउंडर है, इनके पास इनकी बेटर बैटिंग लाइनअप है इनकी है। अब ये इंटरेस्टिंग होगा ये मैच, मतलब मुझे लगता है कि देखिए मैच इतना आसान कोई एक तरफा होने वाला है नहीं, क्योंकि ये दोनों दोनों तरफ का वो जो जिस तरह की जिस टीम है, तो लेकिन एक अच्छा इंटरेस्टिंग मैच देखने को हमें मिलेगा आज। बिल्कुल बिल्कुल एंड अनिमेश, हाउ डू यू सी दिस 11 as we were discussing? No Prithvi Shaw, they will probably now open with Mitchell Marsh, two Aussies opening for the DC team. They have Shai Hope, who will probably, I guess he will keep wickets if he's there, or if Rishabh Pant decides he wants to keep wickets, because इसी this रीजन से मुझे भी लग रहा है कि है। या दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। अब क्योंकि दिल्ली पहले बैटिंग कर रही है तो हमें बाद में पता लगेगा, लेकिन जब दिल्ली बॉलिंग फील्डिंग के लिए आएगी तो ग्लव्स किसके हाथ में होंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आई शाई थिंक होप या ना ऋषभ पहले, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि पहले पंत। ऋषभ पंत ही करना चाहेंगे। हाँ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि ऋषभ, मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत ही छोड़ने वाले हैं, मतलब अभी जिस तरह का उनका अभी एक समझिए कि उनका टेस्ट हो रहा है वो, तो आई थिंक अगर वो फिट है तो पहले विकेट कीपिंग करना चाहेंगे। लेकिन शाई होप है बैकअप के तौर पे कि अगर कुछ फंसते हैं, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो शायद शाई होप कर पाएंगे। ओवर टू अनिमेश। एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से लेकिन शाई होप कहीं ना या कहीं यही सिचुएशन के लिए होगा, और मुझे लग रहा है एकदम से इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे अपनी बॉडी पे भी। और एक कमबैक कर रहे हैं तो वो अभी कप्तानी का भी भार है, बैटिंग भी करेंगे, उसके बाद फील्ड पे भी मौजूद रहेंगे। और 4 ओवरसीज प्लेयर्स हैं तो आपको सब्स्टिट्यूट में मुझे लग रहा है जो जिस तरह के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है वहां से मुकेश कुमार ही पिक होंगे, सबसे एक्सपीरियंस बॉलर वही हैं। और ये दोनों ही टीम में देख के मुझे अच्छा लगा कि जो अनकैप्ड प्लेयर्स रहे उनको मौका मिल रहा है। उधर शशांक सिंह थे, यहाँ सुमित कुमार हैं। सुमित कुमार ने बहुत अच्छा डोमेस्टिक सीजन गया है उनका। और मुझे कहीं ना कहीं मैं जो कंपैरिजन कर पा रहा हूँ पंजाब किंग्स और डीसी की प्लेइंग 11 में, बहुत छोटी सी बात है लेकिन वो जील जो होती है ना, वो ज्यादा लगती है मुझे दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड में। जो जीतने की जील कहते हैं जिसको, वो ज्यादा है। वो बैलेंस ज्यादा ज्यादा कहीं ना कहीं क्लिक करने वाला जो बैलेंस है, जैसे ऋषभ पंत जिस तरह से रिकवर करके आए, दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड में भी वो जील दिखती है कि वो जीतना चाहते हैं। और वो बैलेंस जो हर प्लेयर के, अगर आप एक पर्सनल ग्रोथ देखें, हर प्लेयर की एक पर्सनल कैरेक्टर को देखें, चाहे वो डेविड वार्नर हो, चाहे मिचेल मार्श हो, चाहे ऋषभ पंत हो, अक्षर पटेल हो, वो एक अंदर से जील है जो जीतने की, वो दिल्ली कैपिटल्स मुझे ज्यादा दिखती है। और ये बैलेंस, ये साइड मुझे ज्यादा बैलेंस नजर आती है, जो जीतने की चाह रखती है, पूरे टूर्नामेंट में कुछ करना चाहती है। पंजाब किंग्स में कहीं ना कहीं वो एक बिखरापन दिखने लगता है कि आप कहीं ना कहीं वो क्लिक नहीं हुआ। हर मैच में एक अलग अलग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन वो एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं मिलती। कहीं ना कहीं वही चीज उस टीम को मात देती है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड में वो नहीं देखने को मिला। और बहुत अच्छा स्क्वाड है। बॉलिंग में कुछ कुछ कमियां होंगी क्योंकि अभी बहुत दिन बाद हम इन सारे प्लेयर्स को देखने को मिल रहे हैं। खलील अहमद आईपीएल स्टार रहे हैं लेकिन बहुत लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं वापसी कर रहे हैं। ईशांत शर्मा अनुभवी प्लेयर हैं। उसके अलावा मुकेश कुमार का T20 फॉर्मेट में कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट की तरह आना, अब वो डीसी के लिए कितना वर्क करेगा ये देखना जरूरी होगा। बिल्कुल। And Ramya, do you also think Shai Hope, the reason Shai Hope is in the 11 is because they are not taking risk with Rishabh Pant and wicket keeping? They want a keeper to be in the 11 because they could very well have played Jai Richardson in place of Shai Hope. आपके पास एक बॉलर और आ जाता ओवरसीज अच्छा क्वालिटी बॉलर, तो आपने उसको सैक्रिफाइस करके शाई होप को खिलाया है। इज विकेट कीपिंग, डू यू थिंक द ओनली रीजन, और आपको लगता है कि विद द बैट शाई होप विल गिव देम something really good that they are aiming for? Perhaps, Kanav, that could be one of the reasons, not the sole reason for playing Shai Hope in the 11. Because if I go by numbers, let's just ignore 2024, because in 2024, Shai Hope played only 2 matches against Australia and he made 16 runs. So it wasn't a great year for him. But in his T20 career, the biggest year for him came in 2023, which was last year. In 7 matches, he made 189 runs. And if I'm not wrong, his highest was around 45, just touching 50. And he is a quick fire
and I think I should not stress on it quick fire, because obviously he's a person who comes from the land of all big hitters, the Caribbean. So he's a player, who has that in him. He can go after balls, he can give you those quick runs whenever needed. I'm not pretty sure that will he come to play at number 3 or not. It'll actually depend a lot on the match situation. Given DC are batting first, that they can bring Shai Hope at that number, but not too sure about it, because it'll again depend on how Warner and Marsh will start. Also, given Warner's form, Warner is that one person you can't really predict about. He's now focused only to T20 cricket, given he has retired from the other two formats. So I have really no idea how Warner will be playing, because on any given day, Warner can be a big player. But if he doesn't perform well, then I think a lot will come on Shai Hope's shoulders and others as well. They have got decent batting depth, given that they have Akshar Patel as well. Akshar Patel, last year we saw that how Patel won, the number of matches that DC won, because DC finished on the second last position. So on the number of matches, in the total number of matches that DC won, I think more than half of the matches were won by Akshar Patel only, with bat and ball. So Akshar Patel is a key player out there. So Shai Hope, obviously DC might have thought, they might have given this thought that if Rishabh Pant comes across with any difficulty, or if he is not, feeling 100% on field, Shai Hope can be a person, because you don't know, right? Anything can happen even in the first innings while he might be batting. So if he'll be batting and if he feels that I'm not feeling comfortable, so they might have to bring in Shai Hope in the second innings while they'll be, fielding. So I think it can happen, but I think 2-3 matches they'll also keenly observe Rishabh Pant. And Rishabh Pant has been declared fit as a wicket keeper batter. So I'll again second what Dharmendra mentioned, that first choice will be Rishabh Pant only. Otherwise, अगर उन्हें सिर्फ बैटर खिलाना होता तो BCCI बोलती कि he is fit as a batter. फिर वो wicket keeper batter क्यों बोलते? So they have mentioned it clearly that he's fit as a wicket-keeper batter, which means that they'll be observing him as a wicket-keeper batter only. But Shai Hope is a very good option. He has performed decently well last year, and hoping for good quick runs from him this season as well. Yeah, well, the match has started, and before we end this live, one last question. It is a very quick prediction. Who's going to win this match? We'll start with Dharmendra. DC or Punjab? I think Punjab. Today I'm betting for Punjab. Punjab. Animesh? DC. So, Ramya, tiebreaker. Oh, it's a very tough one. I don't know. My heart says Punjab. 1 DC 2 Punjab. We'll have to wait and see now, because a very interesting double-header day today. SRH takes on KKR in the evening game, so a lot of cricketing action in store. And when there's cricketing action, there's Cricket Next for you guys to give you all the updates that you guys need. I would like to thank Dharmendra, Animesh, and Ramya for connecting with us, and thank you so much to all our viewers. Please enjoy the match. We'll see you after the match. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।